Sei, sei. Đây là những người được cảnh sát. Asana.
वरती आला ये वरती चल. ये वरती. सही सही. हॅलो, हा सर. येस सर. हो, यस यस यस. येस सर. 8:15 पर्यंत घ्या सर. थोडासा लेट हो झाला जॉईन व्हायला आज हो स्टुडंटला. हो हो हो, नक्की नक्की नक्की. हो हो. ओके सर. Yes, yes. थँक्यू. गुड डे सर. हो हो. गुड मॉर्निंग सर. हा, गुड मॉर्निंग टू एव्हरीबडी. गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय का? आय एम ऑडिएबल. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Let's start with yesterday. What we from, where we have to yesterday. Yesterday we proved the law of chemical combination. So what is mean by that law of chemical combination? So the law of chemical combination, which state that what is the law? The law which is given to you, law of chemical combination. And this law of chemical combination can be stated that the mass of reactant is equal to mass of product. That is the law of conservation of mass. So we have to, next one is the law of definite proportion. What is meant by that law of definite proportion? In earlier lecture, as I stated that the chemical combination means the mass of reactant and mass of product is the constant during the chemical reaction. What happened during the chemical reaction? Mass of product is equal to mass of reactant. That means mass never be changed during the chemical reaction. So it is the law of conservation of mass which is given by Lavoisier. So law of definite proportion, that is the law of definite proportion. Law of definite proportion. What is meant by that law of definite proportion? The chemical compound obtained by different sources. A chemical compound a chemical compound which obtained by
A chemical compound which obtained by different sources. Obtained by different sources. Different sources. So source may be changed. I will explain later. The chemical compound obtained always contains same number of always containing always containing same number of always containing the same number or same percent of each constituent element each constituent elements. So it is regardless where the sample you have to obtain. Suppose the law, what is the you have to be the chemical compound which obtained the different source of containing same percentage of each constituent elements. That means what is the law is said that law of definite proportion. What is mean by that? The law said that suppose अगर आपने पानी लाया, पानी कहां से लाया? एक तो आपने पानी समंदर से पानी लाया, तो उसका भी कंपोजिशन जो है समंदर के पानी का कंपोजिशन H2O, वहां भी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन होगा. अगर आप वही वाटर अगर आप वेल से लाओगे और किसी तालाब से लाओगे उसमें का वाटर, और इवन दो यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम वाटर बॉटल और यू कैन ऑब्टेन सैंपल फ्रॉम गटर का पानी भी लिया, तो भी उसमें H2O का जो कंपोजिशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो दैट इज नेवर बी चेंज. मींस एवरी सैंपल मींस ऑब्टेनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, कहीं से भी आप सैंपल, चाहे आप लैब में वाटर बना लो, तो लैब में अगर वाटर बनाया आपने तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एवरी टाइम इट इज अ सेम, वो एवरी टाइम क्या होगा? सेम ही होगा. सो इट डजंट चेंज. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी कहीं से भी सैंपल उठाया, कहीं से भी उठाओ आप पानी चाहे समंदर का ले लो, आप पानी चाहे तालाब का ले लो, आप पानी चाहे गटर का ले लो, आप पानी चाहे बोतल का ले लो, आप पानी चाहे केमी लैब में बनाओ, वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम ही रहेगा. मतलब एक ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, मतलब 16:2:16. So this composition fixed which does not change whenever you sample obtained from anywhere, कहीं से भी आप सैंपल उठा के लाओ, ये चेंज नहीं होगा. ये कहना है हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट proportion. That is said by law of definite proportion. A chemical compound which obtained from different source always containing the same percentage of each constituent elements. Same percentage of each constituent elements. For example, water और भी कुछ अमोनिया. हमने suppose you have to prepare अमोनिया. अगर हमने अमोनिया प्रिपेयर किया NH3 लैब में प्रिपेयर किया तो भी आपको वही कंपोजिशन मिलेगा. अगर आपने बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया तो भी वही प्रोपोर्शन मिलेगा. आपने यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया अमोनिया, वही प्रोपोर्शन मिलेगा. मतलब आप सैंपल कहीं से भी ऑब्टेन करो, वो सैंपल का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, कंस्टिट्यूएंट जो बॉन्डिंग है, वो चेंज नहीं होगी. सो इट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. Okay, so you have a next law is law of multiple proportion. Next one is the law of multiple proportion. Law of multiple proportion. That's multiplicity. So multiple proportion. What is meant by that multiple proportion? Look here. The statement is occur two elements are combined in the form of if two elements are combined. If you take identical elements, so two elements are combined. Two elements you have to combine. This combine to form a more than one compound. To form more than one compound. More than one compounds to form
more than one compound, to form more than one compound, the masses of one element that combine, the masses of one element, the masses of one element that combine the masses of one element that combine with fixed mass of other element, with fixed mass of other elements combine fixed mass of other elements, they are in the ratio of small whole number. They are the ratio of small whole number. They are the ratio of small whole number called, they are ratio of small whole number called law of multiple proportion. What is it called? Law of multiple proportion. For example, you have a, suppose you have NH3, then N2H4, like this, or N2H2. Look here. Here is a combination of hydrogen with nitrogen. So atomic number of nitrogen is 14:3. Here 28:4. Here 28:2. So look, they are simple ratio. They are combined with simple ratio 28:4, 28:2. So the law is, if two elements are combined to form more than one compound, the mass of one element that combine with the fixed masses of other element, mass of one element that combine with fixed masses of other element, so they are in simple ratio. So look here, NH3 14:3, N2H4 28:4, N2H4H2, that is 28:2. So like this means the combination, look here, the combination will be occur. How the what is the aim of law of multiple proportion? That means a single elements like a nitrogen. You can number of lot of example, millions and trillions of example. For example, we have taken nitrogen example. Nitrogen and hydrogen are combined in a different form of ratios. So nitrogen and hydrogen combine to form ammonia, and nitrogen and hydrogen combine in different ratio to form hydrazine. So nitrogen and hydrogen combine to form another different compound. So like this. So you have to be here the proportion are changes. Here is the 14:3, 28:4, 28:2. So like the multiple proportion, the nitrogen atom in multiple proportion, that is in a small whole number is multiplied. One thing is that small whole number you have to be multiply. It is a law of multiple proportion. That means in your ये आपकी जो SPI की एग्जाम है उसमें आपको क्या पूछा जा सकता है? नो डाउट आपका 9th और 10th का है, लेकिन 10th के एग्जाम में मास रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिर्फ लॉ ऑफ मास दिया है. दैट इज द law of mass neither be created nor be destroyed. That law is given, but next 2-3 laws are not given. So that question may be relatively asked like this. So not the compound are in ratio and they follows that laws. So like this. So it given in your option. So it is the law of multiple proportion. So next one isn't clear it? ये हो गया क्या आपका क्लियर? बताओ. Yes, sir. ओके. सो इसमें याद क्या रखना है? देखो आपको याद क्या रखना है इसमें. देखो आपकी जब एग्जाम है तो याद क्या रखना है. देखो बच्चों, आपको इन चारों लॉ में से कोई तो भी एक लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका थोड़ा रिलेटिव क्वेश्चन आएगा. रिलेटिव मतलब कैसा कि आपको कुछ भी कंपाउंड दिए जाएंगे और उसमें बोला जाएगा कि दिस कंपाउंड कैन फॉलो विच वन लॉ. तो आपका ऑप्शन
वहां पे ऑप्शन भी रहेंगे आपको, और तीनों लॉ बताएंगे। कौन से तीन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड नेक्स्ट one is a law of reciprocal proportion. So which one law is obey here? Whenever you make like this like this compound, आप इस टाइप के कंपाउंड अगर बना रहे हो तो कौन सा लॉ आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब आपने पढ़ा है, आपने चारों लॉज जो है आपको याद है, लेकिन यहाँ पे कौन सा लॉ एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है ये आपको बताना है। दैट इज द वेरी ट्रिकी वर्क, बिकॉज यू हैव 75 क्वेश्चन एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड यू कैन फॉरगेट वट एवर यू लर्न इन द क्लास। आप जो भी लर्न किया क्लास में, वहां जाके आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस आने के बाद आप वो भी भूल जाते हो। ऐसा मत करो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर बाद में अपना लॉजिक उस पर लगाओ, ठीक है। Then next one is the law. Next one is the law of reciprocal proportion. Law of reciprocal. Next one is law of reciprocal. Law of reciprocal proportion. So this, according to this law, when two elements, law of two elements combine separately. When two elements combine two elements like A and B combine separately. Two elements are combined separately with the same weight of third element. With same weight with third element. Third element. Same weight with third element. Say C. Or you can say it is a C. Say capital C. Bracket close. Say capital C. The ratio which they do so, the ratio they do so, the ratio they do so, the same or simple multiple of the ratio they do so, what you have to be, they do so same or simple multiple, same or simple multiple, simple or multiple proportion, simple or multiple proportion of the ratio which they of the ratio which of the ratio they of the ratio they A and B are combined. A and B are combined. A and B are combined. A and B are combined with each other. With each other. Okay. So that is a law. For example, H2O. Okay. And another example is D2O. Deuterated water. H2O and D2. Look, here is the 2:60, and here is the 4:60. So both are water. One is the deuterated water, one other is the simple water. So this deuterium H12, इस मास is 2, और इसको हम कैसे लिखेंगे? इस H को हम ऐसा D लिखेंगे, deuterated water. So look here, the ratio 2:16 and 4:16. So multi-reciprocal, 2 आ गया, उसका 4 आ गया. Reciprocal means change हो गया ratio change होगा. One atom changes its ratio. So it is called law of reciprocal proportion. When two elements combine, two elements, which one? Hydrogen and oxygen. When two elements are combined separately, same weight with the third element, say C, the ratio of they do so same or simple multiple proportion of the ratio of they A and B are combined with each other. The ratio are changes. मतलब वही element है, element are same, but their atomic masses are different. Hydrogen, here atomic mass is 1
and this deuterium atomic mass is 2. So the ratio, their weight are changes. That is law of reciprocal proportion. Okay, so it is the law of reciprocal proportion. Now, next one is the next law is the very simple law, and after that we have certain hypothesis like so Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis. That is a very important thing. You should be remember. The equal volume of all gases. Equal volume of all gases. Yes. Equal volume of all gases under the same condition of. Under the same condition of. Same condition of. Same condition. Which one condition? Temperature and pressure. Same condition of T for temperature and P for pressure. Temperature and pressure contain same number of molecules. Contain same number of molecules. Same number of molecules. Same number of molecules. Look here. It is a very important hypothesis because you have to suppose this beaker or this container containing O2 gas. How much O2 gas? 1 liter. Volume of this container is O2 gas is 1 liter. Temperature of this container is 38 degrees Celsius. Temperature and pressure of this container is 1 atm. Okay. So identical container, a unique container containing O2 gas having volume 1 liter, temperature 38 degrees Celsius and pressure 1 atmospheric, 1 atm. Then second container. In the second container containing next gas, another gas, for example, nitrogen gas, N2 gas. This N2 gas, volume of this container is again same volume of gas and temperature, again same temperature, that is the 38 degrees Celsius. Then pressure is the pressure, again same pressure, that is the 1 atmospheric pressure, 1 atm pressure. And okay, so third container, same containers containing next gas is neon gas. So containing volume of this gas is 1 liter. Temperature of this gas is 38 degrees Celsius, same temperature, and pressure of this gas is 1 atm, 1 atmospheric pressure. So temperature, pressure, and volume are same. Similar temperature, similar pressure, and similar volume. So we have been look what the laws are says. Avogadro's hypothesis says you have a 3 different types of gases you have to be given. आपको 3 अलग-अलग टाइप के गैसेस दिए हैं और वो गैसेस आप हर एक कंटेनर में सेम वॉल्यूम है उनका, मतलब 1 लीटर आपने O2 गैस लिया, 1 लीटर आपने N2 गैस लिया और 1 लीटर आपने नियॉन गैस लिया, तो वॉल्यूम क्या होगा? सबका सेम हो गया। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सबका सेम है। टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस आर सेम, तीनों कंटेनर का टेम्परेचर भी सेम है। और प्रेशर फिर बाद में आया प्रेशर। अब ये टेम्परेचर प्रेशर हमने फिक्स कर दिया उनका, वो डजंट चेंज। जितना वॉल्यूम, 3 बातें हमने यहाँ पे फिक्स कर दी, एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया और टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर फिक्स कर दिया। सो 3 थिंग्स वी हैव टू keep a constant: temperature, pressure and volume. So temperature, pressure and volume you have to fix it. Okay, so then what he says, same number of molecule, मतलब अगर आपके ये तीनों सेम है तो उन गैस में सेम गैसियस मॉलिक्यूल है। जितने मॉलिक्यूल O2 के आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल N2 के आएंगे, उतने ही मॉलिक्यूल नियॉन के आएंगे, मतलब उनके मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? सेम है। All molecule are the same molecule है उनकी। Okay, so all the container containing equal
molecule. That is the Avogadro's hypothesis. What he says, equal volume of all gases under the same temperature pressure containing equal number of molecules. Containing equal number of molecules. Okay, so it is the Avogadro's hypothesis. So let's start with very beginning. Next one is, ये समझ में आया क्या आपको? चलो बताओ. Yes, sir. You understood? Yes, sir. Okay, okay, very good. So ये अब हम आगे बढ़ेंगे. So very basic thing is atomic number. You deals with atomic number. Atomic number. Can you define the atomic number? Or which is denoted by Z. Can you define atomic number? Let me know what is the atomic number. Number of protons. Very good. Number of proton present in an, what we say exactly? Nucleus. Exactly, yeah. There is a Nucleus. how many positive charge is present inside the nucleus. Look here. It is the atom and it is containing the nucleus. Inside the nucleus containing the positive center and outer shell is the electron. This is the electron which is the revolve around the nucleus. So the electron having negative charge and proton having positive charge. So there is a charge balance. जितने number of proton होंगे उतने number of electron होंगे. Electron may be exchangeable because एक आधा इलेक्ट्रॉन हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं. But proton are not exchangeable. Never be exchange. Proton कभी भी exchange नहीं होगी. जब proton exchange होंगे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे हम proton you do not exchange. So atomic number is the total number of proton. प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट in an atom. Total number of proton present in an atom called atomic number. Atomic number. Okay, so atomic number. So suppose you have a ferrous atom is given Fe. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसका? एटॉमिक नंबर. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम उसका? एटॉमिक मास नंबर. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम उसका? चार्ज ऑन आयन. देखो हर जगह फिक्स है. एवरी वेयर देयर इज अ समथिंग इज रिटर्न बाय, सो एवरी प्लेस इज फिक्स. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास. सॉरी, हाँ, एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर. और इस साइड पे क्या रखेंगे हम? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, यस, एटॉमिक नंबर, दैट इज which is denoted by Z and atomic mass number is A. और इस साइड पे क्या लिखेंगे बताओ? This side Charge on ions. Charge on ions. Charge on ions. And यहाँ पे क्या लिखेंगे? Valency. Number of atom. Yes, number of atom. Valency, number of atom. So all these things fixed position means left hand side below there is a atomic number and upper side, left hand upper side is atomic mass number. So there is a fixed position. Don't write atomic number in place of mass number in place of atomic number, charge number, or all these things you cannot write like this. अगर मीनिंग पूरा कंप्लीटली मीनिंग बदल जाएगा. मतलब आपने देखो, अगर आपने 10 रेज़ टू पावर ऐसा लिखा कुछ 5, इसका मीनिंग, और 10 5 इसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है. These two things are completely different. That is, it is a very different. ये अलग अलग है. That is a different meaning. Okay. Then it is the atomic number. Then क्या लिखा आपने? ये लिख लिया क्या? आपने ये लिख लिया क्या? Yes, sir. Okay. Next one is atomic mass number.
atomic mass number, which is denoted by capital A. Atomic mass number, which is denoted by capital A. How the total number of the total number of or the sum of, or you can write like this, the sum of proton and neutron present, proton and neutron present in an atom called atomic mass number, How? Look here. How you can find out the atomic mass number? Suppose this is carbon atom. This carbon atom having 6 number of electron. This carbon atom 6 number of proton. Same carbon atom 6 number of neutron. So total proton plus neutron, that is how much? 12. Its atomic mass number is 12. Then you have to be, next example is nitrogen atom. So nitrogen atom, there is the 7 proton, 7 electron, okay, then 7 neutron, then 7 proton. So the sum of proton plus neutron is 14. So atomic mass is 14 and atomic number is 7. Then oxygen, 8 and 16. So 8 is proton, 8 neutron and 8 electron. So how much is atomic mass? Is 16. So you can find out like this. Once you know atomic number, you can find out its atomic mass number. But remember, आपके पास अगर एटॉमिक नंबर है, ओके, आपको पता है अगर एटॉमिक नंबर किसी भी स्पेसिस का, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप एटॉमिक मास नंबर गेस कर सकते हो. यू कैन गेस द एटॉमिक मास. हाउ यू कैन एग्जैक्ट, उसके डबल क्या रहता है? हमेशा मास रहता है, एग्जैक्ट डबल. बट ये हमेशा नहीं होगा. अगर 50, 25, 26 से आगे अगर एलिमेंट एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर उनका 25 से ज्यादा है, वो उनका एटॉमिक मास नंबर भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. मतलब कैसे? सपोज आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 के कितने डबल कर दो, वो होगा एटॉमिक मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन. देन एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, उसका डबल करो, वो होगा एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन. 12 इज द एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन. लेकिन हर बार वैसा नहीं होगा. क्लोरीन 17 एंड ये हो जाएगा 35, थोड़ा सा ज्यादा. 25 एटॉमिक नंबर 25 से आगे अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा एक दो डिजिट, 1-2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें. क्या बताया मैंने? व्हेन द एटॉमिक नंबर इज एग्जैक्ट डबल, बट व्हेन यू गोज बिहाइंड द 25, एटॉमिक नंबर 25, उसके ऊपर के जो है उसमें 1-2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं. 1-2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, सॉरी 1-2 प्रोटॉन, 1-2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए. प्रोटॉन नहीं, सॉरी, मैंने प्रोटॉन बोला शायद. प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे. बिकॉज न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. सो न्यूट्रल पार्टिकल दे आर हैविंग ओनली मास. न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास है, चार्ज नहीं है. 4 पार्टिकल 2 ही है हमारे पास. एक है प्रोटॉन एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉन. बट इलेक्ट्रॉन हैविंग मास बहुत कम है. इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है. लेकिन न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के पास क्या है? सिर्फ मास है, चार्ज नहीं है. न्यूट्रॉन हैविंग न्यूट्रल इन स्पेसिस. न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पेसिस है न्यूट्रॉन. सो न्यूट्रॉन हैविंग ओनली मास, नॉट अ चार्ज. सो देखो क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
17 क्या है इसके पास, प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। 18 क्या है, न्यूट्रॉन। सो 135, the atomic mass of chlorine is 35। एक न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा एक दो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया, उसका एक या दो न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं। सो दैट इज यू कैन रिमेंबर, जिन 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 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, 17 18 के आगे बढ़ जा रहे हैं एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट, those element which having atomic number is more than 20 and beyond the 25, their atomic mass number is not exactly double of atomic number। उनके atomic mass number exact डबल नहीं, डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा वो। मतलब यहाँ पे 17 और 34 आएगा, लेकिन एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर थोड़ा सा बढ़ गया। दैट इज एटॉमिक मास नंबर थोड़ा सा बढ़ गया। ओके, इट इज अबाउट द एटॉमिक mass number. So we have a more example of atomic mass number. For example, look here, phosphorus. Phosphorus atomic number is 15. So phosphorus having 15 electron, 15 proton. Okay, charge are exactly balanced, and 16 neutron. So what is the mass number of phosphorus? Is 31. That is the atomic mass number of phosphorus is 31. So you can write like more closely, 31. Atomic mass number of phosphorus is 31. Okay, remember all these things. So it may be behind the atomic number 25. Suppose you have atomic number magnesium, Mg atomic, it has 12 Mg, Mn का लिया atomic number is 25. It has 25 electron, 25 proton, and 26 neutron, or 27 electron, 26 neutron. So 50, and the atomic number is 25, and this one is 51. Atomic mass number is 51. More than one neutron are extra, so the mass number increased by 1. Exactly 25 double is 50, and one extra proton, one extra neutron is added, so there is an atomic mass is 51. So let's start with another one, is the molecular mass. Molecular mass. Molecular mass. So just like atomic mass, you have a molecular mass. The sum of atomic mass present, in a molecule is called molecular mass. The total, the sum of, you can write the sum of atomic masses, the sum of atomic masses present, the sum of atomic masses of all elements present in an atom, in a molecule, called molecular mass. Okay, so molecular mass. How? Look here. Suppose you have a NaOH, sodium hydroxide. Let's find out its molecular mass. How you can find out molecular mass of sodium chloride? So how many element is present? Example number 1. So 1 is sodium atom. Atomic number of sodium is 11. Atomic mass number is 22. Okay. So how many sodium is present? 22 into one atom. So how much it was? 22 gram. Then next atom is oxygen. Oxygen atomic number is 8. Atomic mass number is 16. How much oxygen? Oh, 1 oxygen. 16 into 1 is equal to how much? 16 gram. Then next element is hydrogen. Hydrogen atomic mass is 1. So 1. How many hydrogen present? 1. 1 into 1 is equal to 1 gram. So total how much? This 6, 7, 8, 9. And this one 39
gram. So it is comes to 39 gram. Atomic mass of sodium hydroxide Sir. is 39 gram. Okay, Hello? it is 39 gram. सोडियम सर का सोडियम का 23 होता है ना एटॉमिक मास. हाँ, कभी कभी वो कभी कभार होता है 23. आता बघा, कधी कधी होतं ते. सोडियमचं काय, दोन आयसोटोप्स आहे, एक 11 आहे आणि एक 22 वाला पण आहे आणि एक 23 वाला पण आहे. न्यूट्रॉन नंबर थोडासा एक जास्त असू शकतो तो. म्हणजे तुम्हाला इथलं 100% एक्झॅक्ट नाही विचारणार, तुम्हाला जे मास नंबर आहे ते दिलेला असेल ऑलरेडीच, की याचा इतका याचा इतका. त्याच्यामुळे तो जास्त कॉन्ट्रीवर्स होऊ नये, ज्यादा कॉन्ट्रीवर्स नहीं होने के लिए आपको मास नंबर ऑलरेडी यू प्रोवाइड द मास नंबर. बट अगर नहीं दिया है तो मैं बता रहा हूं आपको, कभी कभार हो सकता है, थोड़ा सा 39 और 40 भी आ सकता है, नियर अबाउट 40. एक दो डिजिट का ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. दैट आप याद क्या रखोगे कि एटॉमिक नंबर का एग्जैक्ट डबल क्या है, मास नंबर है. उससे ज्यादा ही आएगा, वो कम नहीं आएगा. यू रिमेंबर ऑलवेज, एटॉमिक नंबर जितना है उससे उसका डबल मास नंबर है और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा वो, वही आपका मॉलिक्यूलर. अभी सम कर दिया इसका सर एटॉमिक इनकी यूनिट ग्राम में आएगी. हाँ, ग्राम में आएगा. बिकॉज ये यूनिट यू जो लिखते थे आप, यूनिट, वो जो यू है, वो यू विच इज द कंपेरेटिवली C13 का कंपेरिटिव करके, C13 का कंपेयर करके वो उतना ही आएगा. उसका कैलकुलेशन करके वो ग्राम में ही आता है. जितना तुम्हारा एटॉमिक मास है वो इट इज इन ग्राम में ही आएगा, वो मॉलिक्यूलर मास इन तो सर ग्राम. वो एएमयू क्या होता है. एएमयू एटॉमिक मास यूनिट है. एएमयू कंपेरेटिवली C13 का जो स्टैंडर्ड है हमारा, देखो उसके ऊपर C13 का जो है उसके रिलेटिवली है वो. अगर हम उसको कार्बन के आइसोटोप से अगर रिलेटिवली C13 के रिलेटिव हम उसको कैलकुलेट करते हैं, C6H12, ये कार्बन जो है ये एग्जैक्टली इसका एटॉमिक मास 12 है एग्जैक्टली, उसके रिलेटिव में कितना है और वो ग्राम में कर देंगे हम, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इन ग्राम. वो आपको जो कन्वर्जन है वो ज्यादा हेवी और हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैं आपको वो नहीं प्रोवाइड करूंगा. बिकॉज दे नेवर आस्क लाइक दिस क्वेश्चन लाइक दिस. यू कैन डायरेक्टली यूनिट में लिखा तो भी चलेगा और ग्राम में लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर उन्होंने यूनिट में एएमयू में पूछा है तो आप डायरेक्टली ये ग्राम हटाकर एएमयू कर दो. अगर आप ग्राम में लिखा है तो डायरेक्ट ग्राम में लिख दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. उसमें ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं आया 10 साल में, कभी भी उन्होंने ऐसा मास के ऊपर नहीं पूछा. आपको वो क्वेश्चन आएंगे लेकिन 11th में है वो क्वेश्चन, वो 11th साइंस में बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में है. वो आपको इतना डिटेल ज्यादा अगले साल का नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो 10th तक है और 10th के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में यहां तक ही, इससे ज्यादा नहीं है. ओके. यस सर. Then can you able to find out the molecular mass of different species? आप Yes. बता सकते हो molecular mass? Can you Yes. find out molecular mass of HNO3? Calculate the molecular mass of H and O3 in gram. करो find इसका. Let me know molecular mass of HNO3. Find out the atomic mass of hydrogen, sodium, hydrogen, nitrogen, oxygen, and then calculate it and find out the molecular mass of HNO3. Sir, is it 65 grams? 58 gram. 65 grams, sir. Okay, let's check. हाँ, फर्स्ट आइटम इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, एक ही है, तो कितना आएगा ये 1 ग्राम. सो नाइट्रोजन कितने हमारे पास 7 14 so 14 into 1 how much 14 14 ग्राम. सो ऑक्सीजन कितने हमारे पास 16 multiplied by 16 how much it was 48. 63. कितना होगा 12 isn't it? सर 63 आता है. और ये 1 4 5 6 या 63 63 ग्राम. बस. हाँ हाँ 63 का. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हाँ हाँ. अब आप देखो एसपीआई में क्या पूछा था आपको, कि आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के उसका कंपोजिशन निकालना है, फाइंड आउट करना है कंपोजिशन. कितने एटम, आपको कितना प्रोपोर्शन नाइट्रोजन का है, कितना प्रोपोर्शन ऑक्सीजन का है और कितना प्रोपोर्शन हाइड्रोजन का है. सो यू कैन नेक्स्ट एग्जांपल, कैन यू कैलकुलेट द
atomic mass of another example, that is the example third, H2SO4. यस सर मेरा करो, कैलकुलेट 90 करो एवरीबॉडी। 98 है 98 हाँ, और बताओ चलो, बाकी के 61 people are listening the lecture and only some of few of them they can have answering. Look here. How many elements of hydrogen? One elements of hydrogen, one. How many hydrogen is there? There is a 2 hydrogen. So how much it is? 2 gram. Then sulfur. What is the atomic number of sulfur? Is 16 and atomic mass is 32. So 32 multiplied by how many? 1. 1 sulfur atom is there. So how much it was? 32 2 gram. So sulfur के बाद क्या है? Oxygen. O8 and 16. So 16 multiplied by how many oxygen? 4 oxygen. 16 4 are 64 60. 64 Okay. So 98 gram. yes. That is a 98 gram. Very good. That is a 98 gram. Are you able to find out another example? yes sir Let's, let's find out the atomic molecular mass of fourth example. K2 Cr2 O7. Everybody must be try. हर किसी को try करना है. Everybody, you can try it because it can be asked maybe in 4 marks. Everybody can try. हर किसी को आना चाहिए. आपको, मुझे पता है आपको एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम पता नहीं है. So I will be give the hint. और एटॉमिक, वो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर is 24. Atomic number of potassium is 19 and atomic number of oxygen is 8. So let's find out. 294. 294. Yes, 295, 294 is somehow relative. Okay, 294, 298 somehow relative. Okay. So can you calculate the fifth example is KMnO4. What is the molecular mass of KMnO4? One 158. 158 sir 158, yes. 150, 157, 158 or 159. Near about that. Because Mn having 50, 51 or maybe 52. 25 atomic number है और उसका 52 भी लिया तो भी चलेगा. So 158, 159 is approximate correct. So let's start with mole concept. Mole concept. It is the amount of substance it is the amount of substance. It is the amount of substance which contain the number of elementary particles which contain elementary particles which contain same number of elementary particles, same number of elementary particles
particles. Same number of elementary particles. Particles may be atom, molecule, ions. आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, एंड न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा. etc. Particles. As the number of atom present in, as the number of atom present in number of atom present in 12 gram of carbon, 12 gram of carbon, C12. Yeah, it is a very, very important sentence. You can note down this sentence. It is a very important sentence. You can note down this sentence because you have to be same number of elementary particles every time when you word 1 mole is comes, so that means the fixed amount. आता हा जो 1 mole है, 1 mole जो है, 1 mole means like 1 dozen. Like for example, अगर हम 1 dozen बोलेंगे तो आप कितना याद करो, कितने पार्टिकल्स हैं? 12. Well, Okay? तो 1 डजन क्या हो सकते हैं? एग हो सकते हैं. 1 डजन क्या हो सकते हैं? बनाना हो सकता है. 1 डजन क्या हो सकते हैं? पाइनएप्पल हो सकता है. 1 डजन क्या हो सकता है? 1 डजन बॉयज भी हो सकते हैं. 1 डजन कुछ भी हो सकता है. Isn't it? 1 dozen is the fixed amount. वो 1 डजन कुछ भी हो सकता है. वो 1 डजन, you take a pineapple, 1 डजन मैंगो, 1 डजन और 1 डजन ऑरेंज, 1 डजन चीकू, कुछ भी हो सकता है. 1 डजन. Like that, similar concept you can apply here. 1 mole means a fixed amount. So 1 mole of is the fixed entities. So 1 mole containing. So this 1 mole containing 6.022 into 10 raised to power 23 particles. This much particles. 1 mole means इतना ही है. वो particles में अब कुछ भी हो सकता है आपका. मतलब 1 mole particles मतलब इतने पार्टिकल्स में. पार्टिकल में क्या क्या आता है? पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं इतने, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं उतने, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. 1 इतना मतलब 1 मोल. सो 1 मोल मींस लाइक दिस मच अमाउंट ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट. वो कुछ भी हो सकता है. अब देखो मैंने आपको बताया कि 1 डजन मतलब 1 डजन में 1 डजन केले भी हो सकते हैं, 1 डजन पाइनएप्पल भी हो सकते हैं, 1 डजन एग्स भी हो सकते हैं, 1 डजन बॉयज भी हो सकते हैं. सो कुछ भी हो सकता है 1 डजन. सो 1 डजन जस्ट इट इज अ नंबर, अ फिक्स नंबर. 1 मोल मतलब इतना ही आएगा. इतने 1 मोल मतलब दिस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स. सो हाउ यू कैन फाइंड आउट 1 मोल, और इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. Gram molecular mass. Okay, so how you can find out 1 mole? आपको समझ में आ ही गया होगा ये. Okay, so how find out moles, number of moles? Number of moles n is equal to number of moles is equal to how it can be calculate the number of moles. So or you can we can write like this. Number of moles n is equal to the mass of given the mass amount of substances, in gram divided by molar mass of the substances
of the substances in gram. Okay. Given mass, given amount of substances in gram and molar mass of the substances in gram. The Diego mass divided by its molar mass, which is equal to number of moles. How? Look here. How it can be possible? Suppose you have to give on. Suppose a question is that. Question number 1. Calculate the number of moles present in 440 gram of CO2 gas in a container. Okay, so let's find out number of moles. So M is equal to amount of substance in gram. So amount of substance, how much gram? 440 gram. 440 gram divided by its molecular mass. Wow. CO2 का molecular mass कितना है? कार्बन 6, 12. कितना आएगा ये? 12. और ऑक्सीजन 8, 16. कितना आएगा? 16 into 2, how much? 32. और ये 12, how much it was? 44 gram. So 44 gram. So 10. this gram cancel. How 10, much? sir. 10 gram. Huh? 10 gram. 44 are 1 10. and 40, 10. 10 gram. 10 moles. How much moles is? 10 moles. Okay. Are you able to find out the number of moles of different species? Yes, आपको sir. एग्जाम होमवर्क के लिए ओके मैं आपको एग्जांपल दूं क्या होमवर्क के लिए Yes, sir. Yes, sir. okay let's Yes, sir. solve the example for homework. Calculate question. Calculate the number of moles present in a 64 gram of O2. Second, two 280 grams of N2 gas. ये भी gas है. Third one is calculate number of moles. So calculate in 200 gram of C6H6O12. C6H12O6. 200 gram of C6H12O6. Fourth one example is 9.8 gram of H2SO4. Let's you have to find out. If any doubt, अगर कोई doubt है तो पूछो. If you have any doubt, then ask me, please. Yes, you have any doubt, please ask me. Sir, can you repeat the definition of pure substances which you told yesterday? Pure substances means they are having containing only one type of atom, or which is chemically all having same chemical property.
10 moles. Okay. You have to give on the answer. बेटा कैलकुलेट करके बताओ, ऐसा डायरेक्टली आप बता सकते हो. यस प्लीज, ये जो है ये आप कैलकुलेट करके बताओ. ऐसा डायरेक्टली आपने ऐसा कितना कौन सा है, दैट वन इज कितना, ये कितना कौन सा कितना है, ये कैलकुलेट करके बताओ. ऐसा डायरेक्टली मत, नहीं डायरेक्टली मत बताओ. यस, हाँ ये कैलकुलेट करके बताओ. किसी ने पूछा मुझे प्योर सब्सटेंसेस, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, they have fixed composition do not change in pure substances. Composition do not change in pure substances. हाँ, इसका जो क्या है कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके बताओ अच्छे से. ठीक है, ये डाउट, कुछ और डाउट है आपको, बताओ. Yes, how to find out molar mass of any substances? Oh no, how to find out? अरे वही तो चल रहा है ना भाई. How to find? Yes, find molar mass of substances. अभी तो बताया ना बेटा molar mass. Yes, Krishna. Yes, Krishna. Are you join the late? Join किया क्या आपने? Okay, our time is over. We can stop here and continue in next lecture. बेटा next lecture में बताऊंगा मैं how to find out the molar mass of any compound. वही तो चल रहा था molar mass, अभी वही तो किया मैंने molar mass, और फिर से तुम वही बोल रहे हो. Bye, sir. Yes, friend. Oh, bye.